आई वुड से अगर आपने एंट्री मार्क्स मास्टर कर ली ना स्टॉक मार्केट में, तो एग्जिट, प्रॉफिट बुकिंग सब हो जाए। Like you define your risk before you define your profit. मुझे लग रहा है कि ये ऊपर जाए, नो, there is no लग रहा है in the stock market. Hi investors and traders, welcome back to the channel. And ये एक वीडियो बहुत खास वीडियो होने वाला है, क्योंकि आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि कैसे एक सक्सेसफुल ट्रेडर बने। इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि आप कैसे पहचानें कि आप कितने चांसेस हैं आपके फेल होने के। क्योंकि अगर हम ये बात जान जाते हैं कि हम कितने तरीकों से फेल हो सकते हैं और उन फेलियर वाले तरीकों को हटा देते हैं अपनी ट्रेडिंग के स्टाइल से, देन आवर सक्सेस स्टोरी बिगिंस। मैं किसी एक बहुत बड़े रिनाउंड ट्रेडर का जर्नल पढ़ रही थी, लाइक उनकी लाइफ स्टोरी पढ़ रही थी, एंड ही वाज राइटिंग that all the biggest traders that you know about have failed many times in their life. मैं हिंदी में भी बोलूंगी कि जितने भी आप बड़े बड़े ट्रेडर्स को जानते हो, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए आप कितने बड़े बड़े, कौन से इंडियन ट्रेडिंग कम्युनिटी में आप किसको बहुत बढ़िया मानते हैं। मेरे हिसाब से भी देयर आर 3-4 very good traders and I genuinely respect them. I will take the names, like no one does it, but I will take the names. अभी नहीं, किसी दिन लूंगी, but I want to hear from you people कि आपको कौन से ट्रेडर्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और बट उसके साथ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप जाके उनकी जर्नी देखिए। ऐसा नहीं है कि वो डे 1 से सक्सेसफुल थे, वो भी कभी मेनी टाइम्स दे हैव मेड देयर अकाउंट जीरो। एंड इवन जहां तक मेरी बात आती है, तो मैंने भी किया है, मैंने भी फेल हो के बार बार खड़े होना सीखा है और बार बार अपनी कमियों को ठीक करके मैं बेटर ट्रेडर बनी हूँ। तो जहां तक बात आती है मेरे ट्रेडिंग की, तो मैं बहुत ज्यादा ट्रेडिंग नहीं करती हूँ, मैं बहुत कम ट्रेडिंग करती हूँ और ज्यादातर पोजिशनल ट्रेडिंग करना पसंद करती हूँ। तो मेरा स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है, बिकॉज मेरा टेम्परामेंट इंट्राडे का नहीं है, और मुझे थोड़ा चैलेंजिंग भी लगता है टू filter the trades and teach the members and at the same time trade myself. It sounds sometimes it's very heavy for me, so I just kind of not do it. So I'm going to give you in this video कि आप कैसे पहचानेंगे कि आपके अंदर वो सिम्टम्स हैं जो एक फेल्ड ट्रेडर के अंदर होते हैं। और जितने भी मैं यहाँ सिम्टम्स दूंगी वो सब मेरे अंदर कभी थे, मैंने धीरे धीरे उनको एलिमिनेट किया है अपनी लाइफ से। और ये जितने भी सिम्टम्स हैं जो मेरी लाइफ की लर्निंग है, मैं आप लोगों को बार बार बोलती रहती हूँ वीडियोस में। शुरू करते हैं। अ ट्रेडर हु हैज अ गुड चांस एज फेलियर has any of the following attributes. So पहला one is under capitalized. आपके पास कैपिटल बहुत कम है, आपके पास पैसा लगाने को बहुत कम है, इसके ऊपर से आपको ऑप्शंस में ट्रेड करना है, तो आप ये जान लीजिए कि आप अपना कैपिटल जीरो करने वाले हैं। आई हैव डन इट मेनी टाइम्स। जब मेरे पास कैपिटल नहीं होती थी, मैं ऑप्शन में ही, बिकॉज लगता था कि अरे आज 10 रुपए का ऑप्शन है तो शायद 20 रुपए का हो जाए। और कई बार होता है लोग 0 to हीरो करते हैं ऑन अ थर्सडे। मुझे लगता है ज्यादा हीरो जो है जीरो हो जाते हैं और जीरो से हीरो बहुत कम होने पाते हैं। तो इफ योर capital is if you are under capitalized, that's one reason of failure, because when you start, either your skill should be high or your capital should be high. When you start, neither your capital is high nor your skill is high, so your chances of failures are very high. Then the lack of discipline. आप discipline नहीं हो अपने trading style में, आप discipline नहीं हो। आप एक दिन कुछ करते हो, अगले दिन कुछ करते हो, और कोई आपके पास एक किसी तरह का डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन पीपल like they have certain rules कि इस, और वो अपना रूल ब्रेक नहीं करते चाहे उसके बाद स्टॉक कहीं भी चला जाए।
A failed trader will always do over trading. जितना उनका अकाउंट है वो पूरा ठसा ठस उसमें ट्रेड करेंगे. अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप पूरा 1 लाख का ट्रेड करोगे. 5 लाख रुपए तो 5 लाख का ट्रेड करोगे. So that's a sign of a trader who may be failing very soon, because your positional sizing is very very important. Does not understand the market. आपको मार्केट के बारे में पता ही नहीं है कि मार्केट आपने कहीं से सुन लिया और आ गए आप पैसा लेके, और किस मिनट आप अपना पैसा जीरो कर दोगे. You don't have any idea. Then a failed trader always rushes into trades. So if a stock is going up, up, and it makes a big candle, a failed trader will enter into at this place, and that's when the stock will start coming down. आज हम लाइव ट्रेडिंग कर रहे थे. सुबह हमने एक ट्रेड दिया था MTNL का 26.5 पे दिया था, और उसने स्टॉक ने हाई लगाया कुछ 30 पॉइंट समथिंग का, ऑलमोस्ट लाइक 15% का रिटर्न दे दिया, एंड अ जेंटलमैन एंटर्ड एट 30. That's a trade of FOMO. Like, please, entry, define your very well, work on your entry. I would say अगर आपने एंट्री मार्क्स मास्टर कर ली ना स्टॉक मार्केट में, तो एग्जिट प्रॉफिट बुकिंग सब हो जाएगा. एंट्री के लिए आप इस तरह का कोई ट्रेड नहीं सिलेक्ट करोगे जो ऊपर 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 जा रहा है, और यहाँ पे आपको बिल्कुल लो लेवल पे जब आप एंट्री लेते हो ना, तो आपका स्टॉप लॉस वेल डिफाइंड होना चाहिए. स्टॉप लॉस कभी भी फार अवे नहीं होना चाहिए. ये एक रूल आपको कंटिन्यूसली फॉलो करना है. Then a failed trader always chases the market. मार्केट के पीछे पीछे भागता है, आगे नहीं होता है, पीछे होता है. मतलब मार्केट ऊपर गया, do not do that, right? And is afraid of missing a move. और कई सारे आप ऐसे होंगे कि अरे मिस हो गया मुझसे, मूव ऊपर चला गया, चलो अभी एंटर कर जाता हूँ. बेसिकली a FOMO trading, fear of missing out. So don't trade out of fear, that you will miss out the profits. If one opportunity is missed, forget about it. Next opportunity will come. There are 7,000 stocks in the stock market, and then 200 of them have options, and options give you plenty of options to trade. You can buy any call option, put option, sell, whatever. Then a failed trader is always very very stubborn about his positions, right? That means he marries a position. उसको एक स्टॉक से प्यार हो जाता है. मतलब उसको लगता है कि ये बस स्टॉक मैंने ले लिया है, अब मैं इस स्टॉक को एग्जिट नहीं करूंगा, अगर नीचे चला गया तो कभी तो बाउंस करेगा, right? So please don't, like, you define your risk before you define your profit, right? Don't miscalculate your risk. Your risk reward ratio has to be extremely good. And a failed trader always misinterpret the news. And I would say that don't interpret the news by looking at the TV. अगर आप टीवी देख के न्यूज को जज कर रहे हो, it can be absolutely wrong. I remember there was a day when Tata Motors gave the worst result, but the stock just went up and up. Why? Because people interpreted that result as if the stock has bottomed out. So misinterpretation of result is very very common among traders. A failed trader will always look for home runs, right? So please avoid that. Then something very very important is that he lets the loser gets too big. अगर आपके लॉस हो रहे हैं, आप लॉसेस को बढ़ने देते, आपको लगता है कि कहीं तो रिवर्स करेगा, और ज्यादातर मैंने देखा है ये ऑप्शंस पे होता है जिनकी एक एक्सपायरी डेट होती है. तो डोंट लेट योर लॉसेस रन टू बिग. Try to cut them short. Define your stop loss. Always make sure that your stop losses are really really small. Then takes winners prematurely. Suppose a stock will run very very low, and if you book your profits in much early, that's also a sign of a failed trader. And then takes trading too lightly. For them it doesn't matter, whatever money has been lost, they're okay with it. Takes large risk, again the same thing, and has little control on his emotions. So please, when you sit in the market, there are no emotions, there are no मुझे लग रहा है कि ये ऊपर जाएगा. No, there is no लग रहा है in the stock market. Your data tells you whether the market is going to go up or not.
आपने अगर IRB में प्रॉफिट बनाया है, अगर आपने UTI में प्रॉफिट बनाया, अपने इंडिया मार्ट में पैसा बनाया है, तो क्यों? ये नहीं कि मुझे लग रहा था, मेरे पास डेटा था, आई हैड डेटा इन माई हैंड. ओके, देयर इज नथिंग लाइक लग रहा है इन द स्टॉक मार्केट. इट हैज टू बी either the data tells you, your system tells you, and system can be sometime wrong as well. So please put your stop losses in place. Now the question comes, how can you be a successful trader? So first rule is do none of it, right? Do none of it means don't have low capital when you start. Have a high skill, have higher skills. Have a discipline. Don't overtrade. Do understand the market. Spend some good amount of time watching charts, watching news, connecting both of them, and don't rush into trades. Take your time while taking a trade. Don't chase the market, right? Let the market come to your condition and then you enter into it. Is afraid of missing a move. Don't be afraid of it. Many more chances will come. Is stubborn a marriage a position or idea? So please don't be stubborn with your position. Just exit if you're feeling market is going down. Please learn how to interpret the news in the right way. And it's always looking for home runs. So don't do that. Then don't let your loose position run too big. Cut your losses ASAP as soon as you can cut. For that, your stop loss has to be really small and your analysis has to be good. Takes winner prematurely. If you have a good winner, don't come out of the stock very soon. I have told you how do you exit the stocks. Takes trading too lightly. Don't consider it too lightly, because this is where you are putting your hard-earned money. In the market, you put the hard-earned money, so don't take it lightly. It's like your business. You're putting some money, so get some money back home every single day. Take larger risk. Please don't do that. Don't take risk. Take calculated risk. Has little control of his emotions. So please do control your emotions when you are sitting in the market, and maintain the journal. That's going to be your life story. When you see it after 1 year, you know what wrongs have you done and how do you overcome it. So with this, I'll be signing off, wishing this video make you a better trader, better learner in the stock market, and keep learning about the stock market every day. If I sit in front of the screen for, let's say, a few hours, out of that 2 hours go into finding the stocks, and the rest go about learning about the stock market. Never give up learning, keep on learning, and keep earning good money every single day. And do join me for live trading from 10 to 11 every single day. We find trades for you where no emotions are involved, only the data has been crunched together, and you can trade along with us, earn some good money, and bring along your family, friends who can also trade with us. With this, I'll be signing off. All the best. See you in the next video.